Hey guys, क्या हालचाल नया दिन नई शुरुआत. So yes, so we were continuing with the rapid revision series and quick pharma notes. So when I talk about pharmaceutical chemistry, so in that we have a lot of different things that we need to remember because pharmaceutical chemistry से most of the questions जो आते हैं अलग-अलग domains से आते हैं. जैसे कि some questions come from the name reactions, some question come from the SM1, SM2, E1, E2 part, some come from the medicinal chemistry, some come from the inorganic chemistry. So inorganic maybe we have two classifications, one from radiopharmaceuticals. So tactitium, which one is a diagnostic agents, iodine 131, tactitium, cobalt 60. So diagnostic agents कौन से हैं? And then alpha, beta, gamma, which one has higher penetrating power, ionizing power, उस पे पूछते हैं. एंड दूसरा सिनोनिम्स पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जैसे रोशेल सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट इज ग्लोबर सॉल्ट, नॉकआउट ड्रॉप्स क्लोरोहाइड्रेट है. सो ऐसे काफ़ी ज़्यादा आते हैं सिनोनिम्स पे. सो यू नीड टू नो प्रेसिपिटेटेड chalk, heavy kaolin, talc, then magnesium aluminum silicate, vegum. सो इन सब के सिनोनिम्स पे ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट है ना. सो इस पे देयर कॉपर सल्फेट, इस पे देयर हैव बीन क्वेश्चंस. So make sure that you know about these parts. Heterocycles, of course, you should be knowing about pyrrole, pyrrolidine, pyrazole, pyrazolidine, pyridine, piperidine, quinoline, isoquinoline, quinazoline, imidazole, indole, tropane. So अलग-अलग drugs में जैसे indomethacin has indole ring, indene ring is present in Celindac, quinoline ring is present in 4-aminoquinolones, 8-aminoquinolones, fluoroquinolones में. Benzimidazole ring is present in albendazole. Nitroimidazole ring is present in metronidazole. So cimetidine is imidazole is ring is present in cimetidine. Ranitidine there is furan ring. Thiazole ring in famotidine. So you need to know about all the different rings that are present. And a pteridine ring is present in folic acid, methotrexate, and all triamterene. Pyrazine ring is present in amiloride. Then benzodiazepine ring is present in diazepam. Hydantoin ring is present in phenytoin, which is 1,3 imidazole ring and all. So we have quinazoline ring is present in Vasaka and all. Then quinoline, isoquin, imidazole, indole, tropane ring is present in lot of drugs. So you should be knowing that pyrrole ring is also present in lot of drugs. Pyrrolidine, pyrazole, piperidine, pyridine. है ना? So ये सब जैसे pyridine ring is present in isoniazid and pyrazinamide. So you should and sorry isoniazid and different other drugs as well. Cycloserine there is different ring. Isoxazole ring is present in clavulanic acid and cloxacillin. Then beta-lactam ring is present in all the beta-lactam antibiotics. So fused with thiazolidine rings, or is it fused with dihydrothiazine ring, or is it fused with just a pyrrole ring? You need to know that as well. है ना. So जैसे rings होते हैं अलग अलग, so you need to know the rings present in the drug. Mostly उसी पे जैसे morpholine ring is present in timolol, thiazole is present in acetazolamide and timolol, but position अलग है. एक में it is 1 2 5, एक में it is 1 3 4. So position. So you need to know the position. जैसे in one drug there could be two or more rings. So make sure that you know learn with the position. This is different positions पे there could be questions because this is confusing. Furan ring is also present in furosemide. Phenoxyacetic और acryl oxy group is present in ethacrenic acid. जैसे बहुत सारे ड्रग है जिसमें अलग अलग स्टेरॉइड ग्रुप is present in vitamin D and all these estrogen, progesterone, testosterone में. Then cyclopropane ring, जैसे imidazole ring in midazolam, triazole ring in alprazolam. Triazole is also present in all the fluconazole, itraconazole. Imidazole is also present in antifungal drugs like miconazole and all. So ऐसे ही आपको drugs relate याद करने हैं. SKR मेडिकेम में क्या आप सबके पढ़ोगे नहीं. There are certain SARs like local anesthetics, beta lactams, ACE inhibitors, local anesthetics, beta lactams, ACE inhibitors. इनके SAR are most frequently asked. So make sure that you do it. Fluoroquinolones, calcium channel blockers, है ना. सो एंटी फंगल से मोस्टली बहुत कम आते हैं. बैक्टीरियल से बीटा लैक्टम पे आते ही आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस है. फ्लोरोक्विनोलोन सल्फोनामाइड से तो बहुत कम चांस है अगेन आने के. सो यू शुड बी नोइंग दैट एंटीहिस्टामिनिक से आते हैं, है ना. टाइप क्लास 1, क्लास 2, H1 एंड H2 फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में जैसे सिट्राजिन हैज़ अ डिफरेंट रिंग, लोराटिडीन हैज़ डिफरेंट रिंग. सो उस पे आ जाते हैं एसएआर पे. सो मेक श्योर कि एसएआर हाइपरलिपिडेमिक में आते हैं, स्टैटिन्स वगैरह पे एसएआर पे क्वेश्चन. सो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जिस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं. जैसे एनसेट्स में नॉट मच क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन एसएआर, बट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में ऑफ कोर्स काफी बार पूछे जाते हैं एसएआर पे क्वेश्चन, लाइक सल्फोनिलूरियाज के एसएआर पे. सो मेक श्योर कि आप वो पढ़ के जाएं, है ना. सो फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, पैरासिटिक, अमीबिक, हेलमिंथिक, रूमेट, थायराइड, गाउट, इस पे नहीं आते इतने.
But if I talk about cardiovascular agents, so hypertensive, arrhythmia, angina, lipidemia, like conditions, even in neurodegenerative conditions, Alzheimer, Parkinson, it's be very less chances. But yes, sympathomimetic, parasympathomimetic, there have been a lot of SARP questions. Sympatholytic, parasympatholytic, there have been questions. So make sure कि आप वो questions अच्छे से करके जाए, because उस पे प्रश्न पूछे जाएंगे. So आप वो नहीं छोड़ सकते. अगला है name reaction. So when I talk about different kinds of name reactions, you should be knowing about major types of name reaction. Colby, Wolff-Kishner, Riemann, Tiemann, है ना? Shapiro, Bamford, Stephen, Bayer, Vinegar, Beckmans, Claisen, Schmidt, Words, Fittig, Wittig, Words, Fittig, Williamson synthesis, है ना? Then Schwartz synthesis. So there have been a lot of them, different reactions are used for formation of different heterocycles like PAN, NOR, NOR, pyrrole, है ना? Freight, for indole synthesis also we have very important reactions, Mannix reaction and all. You need to know Scrop synthesis and all, Fischer indole synthesis. So you need to know Pomeranz Freight synthesis. So ऐसे अलग-अलग synthesis होते हैं अलग-अलग उसके लिए, Hans pyridine. So make sure कि at least आप important synthesis पढ़ के जाए. Then order of reactivity and aromaticity. Reactivity and aromaticity, electrophile, nucleophile. Okay, which one is aromatic, anti-aromatic, non-aromatic? So Huckel's rule, then Bridge rule, Brett's rule and Cram's rule, वो bridge head compounds के लिए होते हैं, है ना? उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, what is electrophile, nucleophile and all. Many a times. Then orthoparadirecting, methodirecting. You should be knowing which one is ortho, strongly orthoparadirecting, weakly orthoparadirecting. उस पे questions that are being asked, like OHNS2, which one is electron donating, which one is electron withdrawing. सो मेक श्योर दैट आप वो भी एक बार अच्छे से कर ले. देन अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस की SN1 SN2 की, सो मोस्टली यूनिमोलिकुलर कौन सा है, बायोमोलिकुलर विच इज अ वन स्टेप, विच इज अ टू स्टेप, विच वन देयर इज वोल्टेज इन्वर्जन, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में देयर इज 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एंड ऑल, है ना? सो इस पे देयर हैव बीन क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट ऑर्डर, which one is having polar protic solvent, which one is having polar protic, Setzeff rule, Hoffman's rule, Markovnikov and Markovnikov rule, है ना? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेटजेफ, हॉफमैन, ये एक बार रूल देख लेना, बिकॉज रूल्स पे देयर हैव बीन क्वेश्चन, ट्रस्ट मी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वट एवर टॉपिक्स आई मेंशनड सभी से क्वेश्चन आते हैं. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप उतने टॉपिक्स करके जाए, है ना? बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस इफ यू गो टू सी. देन aromaticity order, reactivity order, stability order of fluoride pyrothioate, देन पाइरिडीन, क्विनोलिन में कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर. सो यू शुड बी नोइंग दैट एज वेल. So pharmaceutical chemistry से these were the most important topics. I hope that this video was beneficial to you. And the topics that I mentioned आप जरूर उन topics पे focus करेंगे. So that's it for today's video. I hope you did like it. Do like and subscribe my channel for more such upcoming updates related to pharma, and also press the bell icon.